हेलो स्टूडेंट्स, अज असी करांगे एक्सरसाइज 4C। ओके, 4C एक्सरसाइज दे विच जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस दे विच असी करना है एक्सपैंड। तो जस्ट एक्सपैंड करना है क्वेश्चनस नू और क्वेश्चन गिवन है x+8 इंटू x माइनस 10 और इस दे लिए सानू कोई खास फार्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें असीं मल्टीप्लाई करांगे। सो फर्स्ट टर्म x है उन्होंने फर्स्ट नाल मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वेयर, दैन x नू मल्टीप्लाई करांगे इस सैकेंड टर्म नाल। सो ये माइनस है और ये प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस 10x। ओके, उस तो बाद नैक्सट टर्म 8 नू मल्टीप्लाई करना x नाल, तो दोनों पॉजिटिव साइन है तो प्लस आएगा 8x। और उस तो बाद 8 नू नैक्सट टर्म नाल मल्टीप्लाई करांगे, सो प्लस माइनस माइनस 8 into 10 is 80. So this is equals to x square into x value 2 terms है minus 10 plus 8. So क्या आएगा minus 2x minus 80. ओके क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन दे विच भी असीं की करना है एक्सपेंड करना है 2 टर्म्स नू 3a plus 2 by b इंटू 2a माइनस 3 बाई बी। और ये भी सिंपल क्वेश्चन है बट इस दे विच की गिवन है फ्रैक्शन दे विच गिवन है जो डिजिट है, और इसनों असीं सिंपली एक्सपैंड करांगे। सो फर्स्ट जो टर्म है इसनों पहले फर्स्ट टर्म नाल मल्टीप्लाई, सो 3a इंटू 2a, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 एंड a इंटू a इज a स्क्वेयर। सो फर्स्ट टर्म नू सैकेंड टर्म नाल मल्टीप्लाई करांगे, सो प्लस का साइन है और ये माइनस है, सो माइनस आएगा 3a इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 बाई बी। नेक्स्ट सेकेंड टर्म नू पहले फर्स्ट नाल मल्टीप्लाई करोगे, दोनों पॉजिटिव साइन है, सो प्लस 2 बाई बी मल्टीप्लाई बाई 2a। एंड नेक्स्ट इस सेकेंड टर्म नाल मल्टीप्लाई, सो प्लस माइनस माइनस 2 बाई बी multiply by 3 by b. So this is equals to 6a square and this is multiply by 3a into 3 is 9a divide by b, और plus 2 into 2 is 4 into a by b. So this means 4a by b minus 2 into 3 is 6 and b into b is b square. सो a बाई b और a बाई b, और इसका कोफिशिएंट है 9 माइनस 9 एंड दिस इज़ प्लस 4। सो माइनस करांगे क्या आएगा माइनस 5। कोफिशिएंट जो है a बाई b दिस इज सेम माइनस 6 बाई b स्क्वेयर। ओके क्लियर। एंड इस तो बाद साडे कोल एक फॉर्मूला है, सो दिस इज़ a प्लस b plus c whole square. This is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। और ये तुसी फॉर्मूला लर्न करना है, सो इस फॉर्मूले नूं असीं यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करांगे। ओके, तो नेक्स्ट है साडे कोल क्वेश्चन थर्ड, और क्वेश्चन थर्ड है 5x माइनस 3y माइनस 2 दिस होल स्क्वेयर। इसनूं असीं सॉल्व करना है। तो देखो एक किस टाइप का क्वेश्चन है, दिस टाइप 3 टर्म्स a प्लस b प्लस c एंड इस द स्क्वेयर, एंड प्लस का जो साइन है उसकी जगह पर साडे कोल की है माइनस, तो असीं माइनस साइन इस टर्म दे विच एज इट इज़ इन जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज नूं याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो असीं किवें लगा रहे हैं। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a, दिस इज़ b, दिस इज़ c, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल्स टू a स्क्वेयर, दिस मीन्स 5x स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, b की जो वैल्यू है वो असीं की लवांगे माइनस 3y, ठीक है, साइन असीं नाल लवांगे, प्लस c स्क्वेयर की जो वैल्यू है दैट इज़ माइनस 2। सो what is the value of a? This is 5x and b this is minus 3y and c this is minus 2. So a वाली वैल्यूज असीं यूज़ करांगे इस फॉर्मूले दे लिए। सो प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू
A the value 5x, B is minus 3y, plus 2BC, plus 2B means 3y, minus 3y, and C means minus 2, plus 2, C means minus 2, and A means 5x. So ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 5x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ 25x ਸਕੁਅਰ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਪਲਸ 9y ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਸੋ 4 and this is plus minus minus and multiply करना coefficients, 2 into 5 10, 10 into 3 is 30 xy, and minus minus plus, plus into plus plus आएगा, so 2 into 3 6, 6 into 2 is 12 y, minus plus is minus, 2 into 2 4, 4 into 5 is 20 into x. Okay, clear this question? So this is very easy. So next question is question 6th, and 6th question solve ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ formulas discuss ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ formulas ਨੂੰ ਅਸੀਂ as it is use ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ question use ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ simple first formula ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ a plus b plus c square, ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਏ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab ਪਲਸ 2bc ਪਲਸ 2ca, ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ a plus b plus c whole square is equals to these terms same as a square plus b square plus c square, and 2 can be common from these three terms, so 2 common, this is ab plus bc plus ca. Okay, and second formula, if a plus b minus c, ਓਕੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਪਲਸ ਦੀ ਸਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੋ ਏ ਸਕੁਅਰ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਪਲਸ 2 ਸੇਮ ਐਜ਼ ਏ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੀ ਸੀ, ਬੀ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, b is positive, c is negative, so positive negative negative, so ac, a is positive, c is negative, so ac या ca या ac कुछ भी लिख सकते हो, so this is negative. Okay, so next third क्या होएगा, if this is replaced by minus and here is plus, so what is this, and this is again a square b square c square is always positive because square of any number is always positive, plus 2 into, now check the sign of ab, ab का साइन क्या है, a positive b negative, so this is negative ab, b positive b negative c positive, so positive negative positive is negative bc, and then ac, a is positive c is positive, then both positive, then AC is also positive. Okay, clear, and one formula is left now. So fourth formula, if a minus b minus c this whole square, so this is equals to what, a square plus b square plus c square is always positive, and then ab, the sign of ab, a is positive, b is negative, so this is minus ab, so b and c both are negative, so negative negative is positive, so plus bc, and ac, a is positive, b is negative, so this is negative ac. Okay, clear. So next question, sixth is given a plus b plus c is equals to p, and ab plus bc plus ca is equals to q. Then find the value of a square,
बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके एंड देन देखो तीनों साइन पॉजिटिव है, सो दिस मीन्स ਅਸੀਂ ਇਹ फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इस दी जगह ते वैल्यूज़ जो है वो असी पुट कर देनी है। सो फर्स्ट फार्मूले तो साढ़े कोल क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी और इसकी वैल्यू पुट करांगे पी। सो दिस इज़ पी द स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सेम एज प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसकी वैल्यू जो है दिस इज इक्वल्स टू क्यू। सो पुट हेयर क्यू। सो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सो दिस इज इक्वल्स टू पी स्केयर और जो 2q है ये माइनस कर देना, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा जाके। ओके सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू ये होएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन की फाइंड आउट करना है। गिवन है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल्स टू 50 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 47 एंड फाइंड करनी है वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी व्हाट इज इक्वल्स टू दिस। ओके सो इस दे लिए प्लस वाली फार्मूला यूज़ हो रहा है। सो दिस मीन्स असी फर्स्ट फार्मूला ही अगेन यूज़ करना है। सो ए प्लस बी प्लस सी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सेम एज दिस इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर एंड इसकी वैल्यू पुट करनी है। दिस इज इक्वल्स टू 50 प्लस 2 सेम एज इनटू द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो दिस इज इक्वल्स टू 47. So now this is equals to 50 plus 2 into 47 multiply by this is equals to 94. Okay so multiply this by 94, this is equals to 144. So a plus b plus c whole square is equals to 144 and then a plus b plus c equals to प्लस माइनस जो असी स्केयर हटाने हैं तो साइन लेना है प्लस माइनस एंड स्केयर रूट ऑफ 144 इज 12. ओके सो वैल्यू ऑफ दिस इज 12. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8 एंड इन क्वेश्चन 8 द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल्स टू 4 and the value of x square plus y square plus z square is equals to 30. Then we have to find the value of xy minus yz minus zx. Then now this is x plus y minus z, means here is plus and here is minus. So according to this, here is plus and here is minus, we use the formula this second formula. So in second formula put the values here. So a this is related with x y z into a b c. So this term x plus y plus z, minus z is equals to 4. So here 4 square, this is equals to a square plus b square plus c square. This means say this is same as x square plus y square plus z square and the value of this is 30 plus 2 into this term means same term xy minus yz minus zx. So calculate this. Square of 4 is 16 is equals to 30 plus 2 into xy minus yz minus zx and minus हो जाएगा 30. So 16 minus 30, this is equals to 2 times xy minus yz minus zx. So this is minus 14 is equals to 2 times this. So असी फाइंड आउट करनी है वैल्यू इसकी तो 2 की होएगा डिवाइड. सो 2 नाल डिवाइड करांगे तो की आएगा xy minus yz minus zx is equals to minus 14 divided by 2 is equals to minus 7. Okay, I hope आज का लेक्चर थोड़ा समझ आया.
and this is very easy exercise.